हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड बेड टाइम टॉक्स। प्रत्युष हेयर और हमारे साथ बहुत दिनों बाद मीत वापस आया है। बहुत दिनों क्या, 4 दिन बाद आया है, बट बहुत दिन लगता है। तो अरसा लग रहा है तुझे। अच्छा लग रहा है। तो हाउ आर यू गाइस डूइंग? और टॉपिक तो वही है आज। हर बार मीडिया कुछ नया लेकर आ जाती है कि आज इससे लिंक कर देते हैं, कल उससे लिंक कर देते हैं। कुछ नहीं मिला तो केन ले आएंगे, अगर केन से बात नहीं चली तो फिर किसी और को ले आएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड करना कुछ चाहती है, मीडिया उसे करवाना कुछ और चाहती है। तेरा टेक क्या है अमित? अरे मेरा टेक आजकल तो अच्छा लग रहा है, पर बीच बीच में हार्ट अटैक आ जाता है। पोचेटिनो लिंक हो जाता है, लोपेटेगी लिंक हो जाता है, लुइस एनरिके पता नहीं बोल रहे हैं स्पेन जॉब छोड़ के आ जाएगा। सो वियर्ड सा है। मूव इन करते हैं कुछ चीजों में। लोपेटेगी का एक कमेंट आया है। ही वाज आस्क्ड दैट विल ही बी एट सेविया नेक्स्ट सीजन, और उसने क्लियरली बोल दिया है कि नो डाउट, नो डाउट। सो ही हैज मेड इट वेरी वेरी क्लियर। तो प्रॉब्लली इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। व्यूअर्स को बता दें, हमारे कुछ दोस्त हैं जो इंटरव्यू देते हैं ग्रुप से, और क्लियर नहीं हो पाता है। वैसा ही हाल हुआ है उनका। तेरा ही ठीक है। तेरा ही हुआ है। कुछ दोस्त क्या है, तू ही है। कभी 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 मेरा भी करा जाता है इंटरव्यू। वेलकम विशाल, वेलकम। सो क्या है आज? आज व्यूअर्स को क्या सुना रहे हैं हम? यार, टॉपिक ऐसा है कि मतलब यूनाइटेड जो इस तरह से लिंक हो रही है प्लेयर्स के साथ, केन के साथ लिंक हो गई कल, डेक्लन राइस के साथ लिंक हो गई कल। उसके पहले कुछ और अलग बात करते हैं, क्या बोलता है? क्या बात करना है, बता। बात करते हैं यूनाइटेड के टॉप 10 ट्रांसफर्स एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। चल, हाँ कर ले। ठीक है। तो गाइज, we will reveal in 1 minute who was the most expensive transfer in the uh, United's history adjusted for inflation. आप कमेंट कीजिए कि कौन हो सकता है वो, या टॉप 3 या टॉप 10 में कौन हो सकता है। ठीक है, गेट इन इनटू द कमेंट्स। सो काफी सरप्राइजिंग है जो टॉप 10 है ना ट्रांसफर्स, उसमें काफी सरप्राइजिंग नाम रहे हैं। एक एथलेटिक का आर्टिकल आया था, उस पर मैंने देखा था। सो प्रत्युष, इफ यू हैड टू गेस, क्या लगता है कौन होगा? यार मुझे तो पता ही है, मैंने वो आर्टिकल देखा था। अरे तो उसके बारे में गेस क्या करना है मुझे। बट बट बात वही होती है ना कि ठीक है, ये तो तेरे को एडजस्टेड है ना, एडजस्टेड अमाउंट है हम्म, अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन राइट बट नाउ। काफी इंटरेस्टिंग है। काफी सो इंटरेस्टिंग है और कुछ कुछ अल अल स्टेप्स वो दिखाता है एज टू हम्म हाउ यूनाइटेड डू देयर बिजनेस जब वो बड़े स्टार्स को या मतलब वो प्लेयर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो काफी हम्म प्रिंट दिखाता है वो। भाई सेज डोंट वरी मी, नॉट वरीड ब्रो, सब चिल है। अमन पूछ रहा है वॉचलोंग होगा? वॉचलोंग डाउटफुल है, वेरी डाउटफुल। आज करेंगे हम। हमारे एक दो इंजर्ड हो गए हैं लोग, बाद में बात करते हैं उनके बारे में। फुटबॉल एंथुसियास्ट सेज रूनी, रूनी इज फोर्थ on the list, not in top 3, but a good shout, very good shout. आई थिंक अगर आप टॉप 4 या 5 देख लो ना, तो आई थिंक 2-3 ऐसे नाम हैं जो वहां पे इसलिए पहुंचे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द अमाउंट दैट वी प्लेड बट बिकॉज ऑफ व्हाट दे डिड इन द फुटबॉलिंग। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, उस जरूरी नहीं है। रूनी का ट्रांसफर वाज वेरी अर्ली, लाइक वो टाइम पे जो हुआ था, उससे आज फुटबॉलिंग वर्ल्ड काफी अलग हो गया है। सो हाँ लेट्स ठीक लेट्स है। डू अ रिवर्स 10 हाँ, का काउंटडाउन। वो कर ले, हाँ। सो नंबर 10, इट्स लाइक आवर विग्नेश हु वांट्स पोचेटिनो, एंगल दी मरिया। उसका एग्रीगेट वैल्यू बनता है आज इन्फ्लेशन के साथ 94 मिलियन। If you are watching this, Vignesh, you are also the snake who wants Pochettino. Good shout, Paul Pogba is there in the list.
So 10th is Angel Di Maria for 94 million. Number 9 is Stam for 99 million. जब स्टैप Yes. Thoughts यार on him, मतलब Pratyush? यार वर्थ इट यार, अगर जैप स्टैप का हम करियर देखें एट यूनाइटेड एंड व्हाट ही हैज अचीव्ड फॉर यूनाइटेड, तो और जो वो लाता था ऑन द पिच, हिज एग्रेशन इन डिफेंडिंग एंड ऑल, तो वो वर्थ है 99 मिलियन, कीपिंग इन व्यू कि हमने 85 मिलियन पाउंड मैगवायर के लिए दिया है। Hmm. सो इन दैट पर्सपेक्टिव 99 मिलियन पाउंड डजंट लुक की आउटरेजियस अमाउंट हम दे रहे हैं फॉर जैप स्टैप। Hmm. Not for me. He was Yes. he was he was one of the most influencing players at that point of time in the 90s, late 90s. So no problem with that. But 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 फिर बात यहाँ पे ये आती है ना कि if we are really into this influence market जो हम बात कर रहे हैं, स्टिल उस लेवल पे नहीं हो रहा है ट्रांजैक्शंस या ट्रांसफर्स, जिस स्टेज Hmm. पे या जिस जिस तरह से ये इन्फ्लेट करके दिखा रहा है, उस स्टेप पे नहीं होते ट्रांसफर्स। एक कुछ टॉप प्लेयर्स हैं जिनका जाता है वो अमाउंट, सब प्लेयर्स का नहीं जाता है वो अमाउंट। बात करेंगे। सिंस प्रत्यूष को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने उसको स्नेक से कंपेयर किया, लेट मी कंपेयर हिम विथ आवर नेक्स्ट ट्रांसफर। ठीक है, जो टाइटल्स भी जीता है यूनाइटेड के साथ, बट ही इज वैल्यूड एट 100 million एंड इज 8th ऑन द लिस्ट, एंडरसन। बच्चों को तो नाम भी नहीं याद होगा, जो नए देखने वाले हैं उनको पता भी नहीं होगा कि है कौन ये। एंडरसन इज अ कल्ट हीरो। लेट मी टेल यू, एंडरसन वाज अ वेरी हाईली रेटेड मिडफील्डर। आज के जमाने का थोड़ा पैरेलल पकड़ो तो फ्रेड, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग स्टाइल बट इन टर्म्स ऑफ इमेज। फ्रेड जो था अप टिल लास्ट सीजन वाज आवर एंडरसन वो जमाने का, एंड देयर वाज लॉट ऑफ मीम्स रिगार्डिंग, यू नो, ही हैज वन मोर टाइटल्स देन स्टीवन जेरार्ड। विशाल सेज ये भी लिस्ट में। यस यस। सो thoughts on Anderson? I want a comment on Anderson from you. यार एंडरसन मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड था इस लिस्ट में आना। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एंडरसन टू बी इन टॉप 15 आल्सो, बट वही बात तो है कि यार मतलब क्या बोले एंडरसन। और अगर हम इनको इसको वही देखें तो क्या किया था वो एज अ प्लेयर, अगर हम 100 मिलियन पाउंड किसी को दे रहे हैं लाइक व्हाट दिस सेज इन्फ्लेटेड इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो भाई 100 मिलियन पाउंड पे हमने क्या खरीदा है लाइक। वो स्क्वाड प्लेयर था, ही वाजंट इवन यू नो फर्स्ट टीम स्टार्टर्स भी नहीं बन सकता था वो, ही वाजंट गुड इनफ फॉर दैट। Hmm. Yeah. बहुत लिमिटेड उसकी वे ऑफ प्लेइंग थी। विघ्नेश बोल रहा है मच बेटर। Hmm. So, Viraj, uh, saying what you have said, it's very, very derogatory to Manchester United fans. So, you can use Man United, Manchester United, MU, but not this. So, next time if you want to comment on this, I'm pretty sure that you might not be aware about it. So next time you wanna comment, please use those words, and I'll answer your question. Harry Kane looks like a Manchester United signing. You know, he's what, 28, 29, a striker, overpriced. Uh, we need a striker. We need someone who can fit into our starting 11. Uh, so I see Manchester United doing this. आई डोंट वांट अस What टू डू about you, दिस। Pratyush? आई डोंट वांट अस टू डू दिस। बहुत बहुत सिंपल सा एक ही बात है। हम एक तरफ से अपने यहाँ से प्रेस रिलीज में ये बोलते हैं दैट वी वांट टू बिल्ड फॉर द फ्यूचर, वी आर गोइंग टू लुक फॉर समबडी हु विल असिस्ट CR7 इन द नेक्स्ट सीजन। दूसरे तरफ से हम हैरी केन के बारे में न्यूज रिलीज कर रहे हैं। तो इफ एनी मैनेजर कम्स इन, तो अभी तो मैं डीप में नहीं जाऊंगा व्हाट विल इट हैव एन इम्पैक्ट, मैं Hmm. ऊपर सुपरफिशियली अगर बात करें, इफ एनी मैनेजर कम्स इन, ना ही CR7 बेंच पे बैठेगा, ना ही केन बेंच पे बैठेगा, उसका सर दर्द क्या होगा। हम किस किस मैनेजर के साथ लिंक्ड है? पोचेटिनो, ही प्लेज 4-2-3-1 और 4-3-3, यू नो
अगेन सेम 4-2-3-1 जनरली खेलता है पोचेटिनो. 4-3-3 is what Erik ten Hag plays. 4-3-3 is what Luis Enrique plays. तो यार एक स्ट्राइकर का जगह है, दो स्ट्राइकर आपके पास उस क्वालिटी के रहेंगे. रोनाल्डो इज नॉट गोइंग टू लाइक टू बी बेंच्ड. वो नहीं बेंच होना चाहेगा. और वो अगर आप बेंच करोगे तो हंगामा ज्यादा होना है. हैरी केन वोंट लाइक टू बी बेंच्ड. तो भाई आपको और दूसरा बात ये है कि आपको हैरी केन क्यों चाहिए? क्यों? इंग्लिश He's 29 नाम में already. हैरी है. He's 29 already. He's 29 already. आपको फिर यहाँ पे एक और चीज कॉन्ट्रडिक्ट होता है और क्वेश्चन उठती है कि हाउ मच पावर इज बीइंग राल्फ गिवन बाय द बोर्ड. क्योंकि राल्फ का कमेंट बहुत बहुत क्लियर है. राल्फ ने बहुत पहले ही बोला था इस बारे में और उसका फिलॉसफी ये है that he doesn't like to give a player his last contract. He likes to give the player his first or second contract. हैरी केन का ये लास्ट बिग कॉन्ट्रैक्ट होगा एट द एज ऑफ 29. आप एक तरफ से वेज बिल घटाने का रेडी रखते हो. पॉल पोग्बा को अब जाए दे रहे हो बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट 500K पर वीक. 350 आप सैंचो को दे रहे हो तो केन को आप 450 से कम दोगे? When he will be coming, he will be at least asking for 450K per week. तो फिर आपका फिर बेस स्ट्रक्चर का क्या रहा? क्या इंप्रूव किया आपने बेस स्ट्रक्चर में? रोनाल्डो इज एक्सेप्शनल प्लेयर. 500K Exactly. Because of all these reasons, United might do it. Don't want to, man. फालतू है. बट एट द सेम टाइम फिर एक और न्यूज पीआर में आ चुका है कि यूनाइटेड वांट टू इन्वेस्ट ओनली 70 मिलियन पाउंड if we don't get the Champions League or 85 million pound if we get the Champions League. 100 मिलियन तो ये अकेले उठा लेगा. I think वो होगा नहीं. I think numbers will be different. Actual numbers जब आएंगे क्योंकि new manager you start with 50 million it doesn't sound right to me. एक और चीज देख. The kind of players that we are getting linked with lately. Harry Kane, Declan Rice, suddenly out of nowhere Luke Shaw का कॉन्ट्रैक्ट का बात स्टार्ट हो गया है. ठीक है, कल ही आया था न्यूज में. सो ऑल दीस थिंग्स अगेन शो कि पोचेटिनो कैन बी द वन. I don't think so. So I think English media has no clue that whom we are targeting because before the January window we were linked with players like Hadara due to Ralf Rangnick. So we would have a very different list. जो usual list रहता है वो नहीं होगा. अब CDM में there are limited numbers की कौन कौन आ सकता है. But then don't be surprised if you see more system players this time around rather than the usual suspects. I don't see us if we are sane enough we should not go for Rice for 150 million or Kane for 100 million. वो दोनों को स्क्रैप करो. if अगर राइस का डील आपको 60 मिलियन में हो जाता है, ठीक है, 60 मिलियन समझ में आता है, स्टिल अ बिट ओवर प्राइस, बट ठीक है. बट 60 मिलियन से एक मिलियन भी जाना ना, लाइक 80 मिलियन अगर आप जा रहे हो, 85 मिलियन अगर आप जा रहे हो, दैट्स टू ओवर प्राइस्ड फॉर अ प्लेयर लाइक राइस. वो उस लेवल का प्लेयर ही नहीं है. he has to have somebody else along with him ताकि वो अपना काम कर सके. इंग्लैंड में भी उसके साथ फ्लिप्स रहता है एज अ डीएम. वेस्ट हैम में भी उसके साथ एक और मिडफील्डर डीएम रहता है. वो डबल पिवट का प्लेयर है. सिंगल पिवट कब खेलता है वो? हमको सिंगल पिवट प्लेयर चाहिए ना, तो हम क्यों राइस के पीछे भागेंगे? तो वही है कि सिस्टम साइनिंग्स हो तो बेटर रहेगा. वेलकम अमर. रॉक सेज गुड फॉर शर्ट सील्स, परफेक्ट मैन यूनाइटेड साइनिंग. बिल्कुल अवर सो एलवीजी ने कमेंट किया था as much as we hated it, but he said that United is a commercial club, not a football club, and 100% which is a fact. Which is a fact. As much as I hate to admit it, because it's coming out of LVG. Yeah. टाइमिंग थोड़ा ऑफ लगा इसका, बिकॉज मतलब आप इंटरनेशनल ड्यूटी में अपना काम कर रहे हो, आपको आके कमेंट यूनाइटेड के बारे में, और हर साल उसका एक नया कमेंट आता है. एवरी ईयर उसका फिक्स्ड है कि एक कमेंट आता है. He is not wrong. What to say? He is not wrong. बट हो गया यार. आपको बहुत पहले जा चुके हो, आप क्लब से बहुत पहले जा चुके हो. आप जिस समय थे उस समय एड वुडवर्ड वाज द हेड ओवर देयर. अब हेड भी आपका चेंज हो चुका है. But Vishal, comment was right at a wrong time by LVG, but why would he care?
उसको पूछा होगा या whatever, he made a comment. Usually खुन्नस में makes बैठा comments हुआ है, about Manchester United. ठीक है, खुन्नस खा डॉनी के वैन बैठा डर हुआ वीक है को वो। टीम से, हाँ बिल्कुल. So yeah, it is what it is. Anyway, let's move to our number 7. 105 million pounds, and the player is RVN, one of the Absolutely, best strikers. 105 million pound, एब्सोल्युटली वर्थ Yes. इट, एब्सोल्युटली वर्थ इट। मैंने आज तक उससे बेटर फिनिशर नहीं देखा एक्सेप्ट फॉर रूनी, नाइन, R9 एज अ स्ट्राइकर, उससे बढ़िया फिनिशर नहीं था। बट देन अपना जो विग्नेश है, मुरिशियो विग्नेश चीनो, he wants a better finisher. The bottler, he'll finish the club जैसे डायरेक्शन में जा रहा है. The last nail in the coffin. ठीक है. भाई बहुत बहुत कम लोगों ने आई थिंक देखा होगा रोहित वैन निस्टेलरॉय को, एटलीस्ट बहुत मतलब पुराने लोगों ने ही देखा होगा। आई 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 वॉच्ड हिम Hmm. प्ले। भाई साहब, ही वाज लाइक अ पोचर, लाइक एब्सोल्यूट पोचर। उसका मूवमेंट इन द बॉक्स, ऑफ द बॉल मूवमेंट So उसके जो होते थे। एक कंपैरिजन होता है. How do you rate him alongside RVP? फॉर मी निस्टेलरॉय इज अबव आरवीपी। So काफी लोगों ने RVP को देखा होगा, not RVN. So for them, this is the level we are talking about. या आरवीपी उसके सामने एक स्टेप डाउन था। लाइक Imagine. रोहित वैन निस्टेलरॉय वाज एट दैट लेवल कि आरवीपी उसे, और वी वुड हैव गॉटन हिम अ सीजन अर्लियर, Hmm. लेकिन उसका एसीएल का कुछ इशू हुआ था, उसके कारण हम उसको नहीं ला पाए थे। एसीएल से पहले उसका पेस भी बहुत ज्यादा था, उसका पेस थोड़ा सा डाउन हो गया था आफ्टर एसीएल, बट ही वाज, माय गॉड, ही वाज अ फिनिशर, एब्सोल्यूट पोचर। मतलब इस लेवल पे काम करता था ना कि आपको याद, लोगों को याद होगा व्हेन वी लॉस्ट टू यू नो रियल मैड्रिड एट द ओल्ड ट्रैफर्ड, और लोगों ने रोनाल्डो को क्लैप किया था, R9 को, फॉर हिज हैट्रिक, and we were This out is a of the nice Champions comment. League. RVP had a better shot than RVN, but RVN had better instincts. पोचर था। Some आर people. आर आरवीपी का, अमर भाई, आरवीपी जो है ना, आरवीपी के साथ और रूट वैन निस्टेलरॉय में डिफरेंस क्या था ना, कि द मूवमेंट ऑफ आरवीएन, आरवीपी कहीं से भी शॉट ले सकता था और वो बॉल अंदर चल जाता था, बट द मूवमेंट जो आरवीएन ऑफ द बॉल दिखाता था, जिसके कारण बहुत सारे मूव्स आपके खुलते थे, बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स मूव बनाते थे जो कि नहीं दिखता था लोगों को। बाकी तो both RVP has been a cult hero for us, no doubt in बिल्कुल. that. But for me, RVN is one level above RVP. बहुत सारे reasons है उसके. One of the reasons is like, जैसे मीत तू देख ले, तेरा फेवरेट जो है बाबाटो, Hmm. that lazy elegance जो रहता है उसके शॉट का, so he is known for that. Hmm. Similarly, Ruud van Nistelrooy is known for his finishing, like absolute finishing, वो किसी भी एंगल से फिनिश करता था। रॉबिन वैन पर्सी is known for his left foot, जो शॉट्स उसके लेफ्ट फुट पे आते थे। तो वी हैव हैड सम ग्रेट ग्रेट स्ट्राइकर्स। Berbatov का first touch, my God, हाँ, insane. I उसका think फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट फुटबॉल में आई हैवंट सीन समवन बेटर, कि मतलब गोलकीपर से 50-60 यार्ड से बॉल आ रहा है, he'll make it dead. वही रोनाल्डिनियो, स्पॉट पे he'll make it dead. रोनाल्डिनियो जिडान, बोथ कैन डू So, so that दैट। was the level of दैट इज द first touch. लेवल, दैट इज द लेवल वी आर टॉकिंग Not अबाउट। even Messi. Messi will be two steps behind Berbatov in terms of first touch. और उसके finishes भी काफी classy होते थे. मेसी को छोड़ दो आप, मेसी रोनाल्डो दे आर डिफरेंटली, डिफरेंटली। अगर आपको ऐसे देखना है तो आई वुड रिमेम्बर मैराडोना का एक बहुत फेमस वीडियो। मैंने कभी मैराडोना को देखा नहीं है एज सच लाइव, क्योंकि आई थिंक जब से मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया तो उसके 1-2 साल पहले ही उसने रिटायरमेंट ले लिया था, 2000 के आसपास उसने रिटायरमेंट ले लिया था। सो मैराडोना का एक बहुत फेमस है, क्लिप है, जिनको देखना वो Hmm. यूट्यूब पे भी जा सकते देख सकते हैं। मैराडोना टुक द बॉल इन अ ट्रेनिंग सेशन, और वो सेंटर सर्कल होता है ना, वहां पे गया, ही वाज जस्ट जगलिंग द बॉल ऑन हिज लेग्स, ठीक Hmm. है, और उसके बॉल जिगल करते हुए उसने बहुत कस के ऊपर फेंका, बॉल को हिट किया एज हाई एज इट कैन गो, और वो उसने वो 30 टाइम्स किया, अराउंड 25 to 30 Hmm. टाइम्स, और कभी Hmm. भी उसको 3 पेस आगे या 3 पेस पीछे नहीं जाना पड़ रहा था बॉल रिसीव करने के लिए, बॉल जहां उसने Wow. डाला था वहीं पे गिर रहा था।
तो दैट वाज द लेवल व्हाट Amazing. मैराडोना वाज। तो वो सारे लेवल्स के ऊपर बात नहीं करना चाहिए, दैट इज बेटर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. On number six, we have someone at 110 million pounds. Uh, any guesses? Number six. मैं नहीं करूंगा, मेरे पास सारा लिस्ट है। It's Andy Cole. लस्सी पी रहा है बैठ के. अरे लस्सी यार पी रहा गर्मी है, कौन बहुत है, पीता है? बहुत गर्मी है यार। ये हो गया पता, मैं एसी का रूम छोड़ के यहाँ पंखा में बैठा हुआ हूँ। क्या बात है, क्या बात है. Thoughts on Andy Cole? एंडी कॉल वाज अ गुड स्ट्राइकर, बट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा फॉर पीपल दैट हु रिमेंबर एंडी कोल एंड ट्वाइक यॉर्क का वो सीजन इन 1999। Hmm. बट बोथ एंडी कोल एंड ट्वाइक यॉर्क वेयर अ सेकंड स्ट्राइकर, और उन्होंने काम ही इसलिए वहां पे हो सका उनका, या उन्होंने वो प्रोड्यूस ही इसलिए किया क्योंकि दोनों साथ में खेल रहे थे, तो उनका मूवमेंट ट्रैक करना वाज डिफिकल्ट। बोथ Hmm. ऑफ देम वे नॉट ऑफ द क्वालिटी कि वो सिंगली एक किसी भी लाइनअप को लीड कर सके, बट दे वर गुड इनफ कि वो किसी के भी अंडर में एज एन एक्सेप्शनल प्लेयर बन जाएंगे। किसी के भी साथ अगर वो काम करेंगे ना, तो वो एक्सेप्शनल प्लेयर बन जाएंगे। सो विथ व्हाट ही हैज डन फॉर यूनाइटेड, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ट्रांसफर। और और क्या ही बोल सकते हैं, व्हेन यू हैव अचीव्ड सो मच, सो द प्राइस टैग डजंट मैटर। So next on the list is Dwight York with या 118 million value. So you फिर can talk about him as well. वही मैं बोलूंगा, ट्वाइक यॉर्क, एंडी कोल, व्हेन यू अचीव सो मच फॉर द क्लब, व्हेन यू आर द फर्स्ट प्लेयर्स, फर्स्ट टीम टू विन अ ट्रिपल एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश फुटबॉल, तो प्राइस टैग डजंट मैटर। उनका उसका कोई मतलब नहीं होता। आपको जो काम के लिए खरीदा गया था, आपने वो काम करके दिया, आपने डिलीवर किया ट्रॉफीज, फिनिश, इट्स ओके। फॉर मी मेरे हिसाब से लगता है कि ही वाज सेकंड स्ट्राइकर, बोथ ऑफ देम वे सेकंड स्ट्राइकर एंड बोथ कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर वेरी वेल। उनका पार्टनरशिप अच्छा बैठ गया, सो इट वर्क। बट इट डजंट रियली मैटर कि मेरा क्या ओपिनियन, उनके पास ट्रॉफीज है टू शो, दैट्स इट। अमर भाई, अमर भाई asking क्या चल रहा है, लेट आया हूँ. So those who have joined us late, we are going through a list, inflation adjusted value today of the transfers. तो उस पे हम पहुंचे हैं नंबर 5, which is Dwight York, and number 6 Andy Cole. So we'll be going in the reverse order, जो those who have joined late. अमर भाई ऐसे लेट लेट करते हो तो पूरा वीडियो भी देख लो ना साथ में यार. हमारा तुम वॉच आवर्स कम कर रहे हो ऐसे करके. मीत इज ऑब्सेस्ड विद स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, एब्सोल्यूट ऑब्सेस्ड है। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप, वरना वो हमको सुना के जाता है बाद में ग्रुप में कि तुम्हारे व्यूज डाउन हो गए। अरे तो सही है ना. अच्छा, पैशन से कर रहे हैं, हॉबी से कर रहे हैं, डजंट मीन कि लाइट लेंगे. जब भी लाइट होता है तो एक आध डोज देना पड़ता है. ओके, कमिंग बैक टू द लिस्ट. फोर्थ इज probably my favorite, the one hero जो probably हर जनरेशन को पता है, एंड जिसका नाम इज इनफ. कभी कभी WWE में जाके किसी रेसलर को थप्पड़ मार के आ जाता है, कभी कभी रॉन्ग न्यूज की वजह से कंट्रोवर्सीज में रहता है, कभी कभी वर्ल्ड कप में रेड कार्ड ले लेता है. द वन एंड ओनली वेन रूनी, Wait, यूनाइटेड इंग्लैंड्स हाईएस्ट स्कोरर, broke the record of सर बॉबी. आई मीन कितना बोले रूनी के बारे में, इट्स कम one पड़ेगा. best players we have ever had उस लीग में ever. When अगर एवर के बात जाते हैं तो हमारे पास जॉर्ज बेस, डेनिस लॉ जैसे प्लेयर्स भी आ जाते हैं, रिक कैंटोना जो कि बिल्कुल. नियरेस्ट में आते हैं, और पीछे जाएंगे तो और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास। तो he is one of the greatest to ever have been a part of Manchester United, और उसका मेंटालिटी ही अलग था भाई। रूनी का मेंटालिटी ही बहुत डिफरेंट है फ्रॉम एनीबॉडी आई हैव एवर सीन। लाइक अगर आप
बोलो ना कि एक और प्लेयर दे दो जो उस मेंटालिटी का हो, देन दैट वुड बी। दो प्लेयर मैं नाम दे सकता हूँ, एक रोनाल्डो, बट उसका मेंटालिटी यूनाइटेड के कारण आया था। यूनाइटेड से जाने के बाद उसने दूसरे क्लब में वो मेंटालिटी दिखाया था। हम्म। न्यूनी का हमेशा से वो मेंटालिटी था, जब वो एवर्टन में खेलता था तब भी उसी तरह For से खेलता me, था। for me, I don't know how people would think about this, but for me, Wayne Rooney is greater than Cristiano Ronaldo as a United player. एज ए यूनाइटेड प्लेयर, यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बट फिर यहाँ पे आप अगर उस पे बात करोगे तो द इम्पैक्ट दैट रोनाल्डो हैड इन द इयर्स दैट ही वाज हियर एट ओल्ड ट्रैफोर्ड, वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, क्योंकि सामने वाली टीम, दे यूज्ड टू रन टुवर्ड्स रोनाल्डो एंड स्टिल ही यूज्ड टू स्कोर। तो उसका लेवल बहुत ज्यादा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रूनी वाज एनीथिंग लेस। रूनी जो काम कर सकता था, आई स्टिल रिमेम्बर वो वर्ल्ड कप वाला फियास्को जो हुआ था रूनी और रोनाल्डो का, एंड देन द मैच, आई डोंट रिमेम्बर किसके अगेंस्ट मैच था, एंड बॉल वाज ऑन लेफ्ट विंग, रोनाल्डो वाज मेकिंग अ रन थ्रू द मिडिल, रोनी जस्ट सॉ, और वो जो क्रॉस आया था फ्रॉम बिहाइंड, मतलब डिफेंडर खड़ा है, डिफेंडर के पीछे से और राइट एट द लेग्स ऑफ रोनाल्डो, अमेजिंग, अमेजिंग। तो बहुत कुछ था यार, वो डिफेंसिवली भी आपको देता था, स्ट्राइकिंग वाइज चलो भी वो देता सब था छोड़ो, बहुत। वो सब क्लासिक्स छोड़ो, उसके इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। जो उसने भी इंटरव्यू दिया है सन को, he made some explosively honest comments. He made some amazing comments. जो सबसे मतलब बेस्ट, सबसे खुश हो बेस्ट गया मैं कमेंट, इंटरव्यू देख सबसे के। बेस्ट कमेंट मेरे पास वही लगा, रैशफोर्ड शुड गेट हिज फकिंग हेड आउट ऑफ द एस एंड स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल। दैट वाज द बेस्ट कमेंट। मतलब all these rumors and I'm not feeling good, ये गुडी गुडी वाला टाइप से उन्हीं बोलता है भाई चुप कर, चुपचाप गोल मार, धंधे पे ध्यान दे, ठीक है, बाकी सब तेरे लेटर लिखना साइड में लिखता रहे, पहले गोल मार। That was the intention, that was the message, that दैट्स was, व्हाट, I mean, इससे बेटर क्या बोल सकता है क्या बोल सकते हो कोई? यार। गेट There is गेट no योर better motivation. गेट योर एक्ट टुगेदर मैन। आप अब यू आर हियर प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आपका पहला डेरोगेटिव होना चाहिए फॉर द क्लब। बाद में आपको जो करना है करते रहो। एंड दैट वाज द मेंटालिटी ऑफ रूनी, दैट वाज द मेंटालिटी हाँ, ऑफ रूनी, दैट इज व्हाट वी आर मिसिंग। इस टीम में किसी के पास नहीं है, घंटा नहीं है, और एक बंदे के पास है जो रोनाल्डो, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है इस टीम में आके। और जो अल्टीमेट गोल है, which I always felt, कि रोनी का अल्टीमेट ड्रीम is to become a Manchester United manager. तो वो जो चीज है, he explicitly said that, ठीक है, एवर्टन ठीक है, it's good that he is getting interest, but उसका अल्टीमेट ड्रीम is this. One part of me, I think मैंने लाइव भी बोला होगा एक दो बार, कि out of all these managers that are linked, if we get Wayne Rooney next season, I won't be disappointed. नॉट येट, नॉट येट, हाँ, तो नॉट रेडी। यही यही परसेप्शन है, बट नहीं, देन, उसने खुद भी बोला, उसने खुद भी बोला ना कल, दैट आई एम हाँ नॉट हाँ रेडी येट। बिल्कुल। So the next switch is gonna be hopefully ETH के बाद Wayne Rooney. That could be the trajectory, बट आई वांट which ना could be कि huge. वेन रूनी के आने से पहले एक स्ट्रक्चर इन प्लेस हो जाए फ्रॉम Hmm. राफ रैगनिक, बिकॉज अगर आपके पास सब कुछ रहा ना, तो वेन रूनी का जो मेंटालिटी है भाई, वो फोड़ सकता है इस पूरे लीग को। दैट्स व्हाट ही कैन ब्रिंग टू द टेबल। बट अगर पीछे स्ट्रक्चर नहीं रहा ना, तो वो खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इस ग्लेजर्स के साथ डील करने में, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, फिर वो उन्हीं के साथ डील करते रह जाएगा और सब बर्बाद हो जाना है। But Rooney has that power कि वो जो भी स्ट्रक्चर है, वो एक, Jose Mourinho makes one comment in media, he might have half of the fan base alongside him. Wayne Rooney makes one comment in the media, there will be whole United fan base तो behind him. ओले के साथ भी था, ओले के साथ भी था, ओले के जो साथ तो प्रत्युष आनंद ही नहीं था। लेटेस्ट स्टेज पे था, इनिशियल स्टेजेस पे, और ओले ने भी चेंजेस तो लाए हैं, बिल्कुल। चेंजेस तो लाया ओले ने भी। ओले ने भी जो आपको जो यूथ स्ट्रक्चर क्रिएट करके गया है, काफी बेटर है इन व्हाट वी यूज्ड टू हैव। जो आपका डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल इनिशिएट हुआ था, उसके अंडर में स्टार्ट हुआ ये सारे रिस्ट्रक्चरिंग। सही पर्सन आए हैं कि नहीं आए, दैट इज डिफरेंट थिंग। रूनी इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सोशल मीडिया का एरा है उसमें रूनी बहुत बड़ा है।
But is he ready yet? Or उससे भी बड़ा क्वेश्चन, is Manchester United ready for Wayne Rooney? That is a bigger question. Manchester United isn't even ready for Big Sam. क्लब का जैसा हाल चल रहा है, we have become a joke from outside. We are the new Arsenal. ठीक है, fighting for top four. अपना budget depends on getting top four. Trying to find some identity after a huge personality left. Trying to do something in Europa. So we are Arsenal, what they used to do for number of years in the last decade. So ऐसा ऐसा हाल हो गया है. So let's take the comments quickly, then we'll continue with the list. Virat says, I think Raf is out in next season because he has not shown that impact in managing of the team. I disagree, Viraj. I think काफी decent results आए हैं under him. Overall, we are averaging what, over 2 points in Premier League since he arrived. So results wise and playing style wise आपको काफी difference दिखेगा. So I don't see that as no impact. I think he has made a huge impact. और जो recent news भी आई कि he has invited referees into the training ground. So he is using soft power क्योंकि Ole tried to go hard at referees. He tried to have go one or two times, but then that's not working out. United के favor में चीजें नहीं जा रही है, तो he is trying different things. I don't see it as someone with no impact. I think he'll have a huge say in upcoming transfers and the club direction and club structure, which which I think we need. Agar Ralf Ragnick goes out of the club next season, you will see a huge meltdown between in Manchester United fans. जो Yeah. प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, वापस शुरू हो जाएंगे. इतना हद तक का इम्पैक्ट आएगा. You can't have a better appointment in a football club than Ralf and Ragnick in terms of consultancy and and also direction. Ralph is not known for his management of the team. He is known for creating a club. वो बैकग्राउंड में रह के ट्रांसफर्स के लिए जाना जाता है, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे नो इम्पोज करने के लिए जाना जाता है. ही इज नॉट नोन. 5 साल से उसने कोई मैनेजमेंट भी नहीं किया यार किसी क्लब का. दोज थिंग्स इफेक्ट ना आपका. जो जो मैनेजर या जो पर्सन रेगुलरली मैनेज कर रहा है उसका एक बैकग्राउंड टीम होता है, असेंबल्ड रेडी. जैसे वो नए क्लब में जाते हैं वो अपना टीम को लेकर आते हैं ताकि उनको पता रहता है उस टीम को क्यों क्या करना चाहते हैं. राल्फ केम और उसने धीरे धीरे अपना टीम असेंबल किया जस्ट टू गेट थ्रू दिस 6 or 7 months. तो these all things shows कि वो उसके लिए था ही नहीं. He was brought here just to do a job. उसने वो जॉब किया. उसका मेन काम तो समर से स्टार्ट होगा. Yeah, I think उसका मेन काम स्टार्ट हो चुका है. So बैकग्राउंड में चल as रहा है, हमको नहीं uh, पता. as a lot of times it has been mentioned in the show that he is here to make a report card while he is the manager. So I think वो काफी important है कि exit door दिखाना भी काफी important है if we want United back at a good level. अमर का कमेंट है, रूनी का अर्ली पीक करना उसका अर्ली डाउनफॉल की वजह है क्या? हो Define सकता early है. downfall. I think he has had a very long career, and in 30s also he used to score a lot of goals, and he used to play a lot of different positions क्योंकि squad में इतना gap बढ़ता जा रहा था, and Rooney was the stopgap. उसको रोनाल्डो टाइप ट्रीटमेंट नहीं मिला है. So that's one of the reasons where you see a lot of difference as well. But maybe, yeah, हो सकता है, as Pratyush said. सागर says Manchester United management ने already manager done कर चुका है, but Manchester United PR team just doing time pass कर रही है, spreading rumors about linking Harry Kane and Rice. Sagar, let me warn you here. Harry Kane और Rice का जो links है, वो rumor की तरह मत लेना because it's Manchester United. Those are serious links. ऐसा नहीं है कि it's coming from shit source as well. They are coming from good sources. So be scared about it. And manager being done, I also feel that, and I think majority of our group also feels that it's done.
Next manager has been decided, but who knows? Who knows? And Let's wait for a week or two. We'll it have will be a better Pochettino. picture. It will be Hmm? Pochettino. It will be Pochettino. Uh, Best of luck. I think रैफ रैंकिंग 6 महीने में छोड़ देगा जॉब. Okay, so top three transfers, and you're gonna be disappointed in this. Top three inflation adjusted transfers of Manchester United. Number three is one and only, legit one and only, Paul fucking Pogba, 126 million value. Doesn't matter. He's value. He's not even worth 26 million. 100 to हटा He's दो. such a waste. He's such a waste in terms of his Manchester United career. I mean, 6 महीना आप injured रहे, but then you expect all the niceties, and you had the guts to make that to say that interview. Yeah, blame game. हर जगह जाके आप blame game खेल रहे हो. It's not me. It's somebody else. वही तो करता है वो हमेशा से. He मेरे को and Raiola. पोजीशन डिफाइन नहीं That's किया. all they do. एवरी सिंगल टाइम जब कुछ गलत जाएगा या तो रायला का कमेंट आ जाएगा या तो इसका कुछ आ जाएगा. लाइक यार तुमको सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं है फुटबॉल के लिए. व्हेन यू आर आउट, ऐसा कौन कौन से बड़े प्लेयर्स होते थे जो कि जाके दुबई में अपना ये करते थे, अपने आप को री इन्वेस्ट करते थे या दोबारा अपने आप को फिट करते थे. या कैरिंगटन में इतना अच्छा फैसिलिटी है, रिहेबिलिटेट करो ना कैरिंगटन में, क्यों जाना है दुबई. So okay, like ये ऐसा है ना that he had a great talent, great potential, but he fucked it because of his agent. As simple as that. He fucked it because of himself. या World मेरे को class अभी भी लगता है talent and अगर अगर execution. अगर इसके पास सही लोग रहते ना इसके अराउंड जो इसको सही तरीके से गाइड करते, he would have been a brilliant player. बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो लोग जो तुम्हारे आसपास रहते हैं. कीप यू डाउन, तो कीप योर हेड डाउन कि तुम्हारा काम फुटबॉल खेलना है, बाकी बकचोदियां रहने दो. यार True. इससे बेटर बेटर प्लेयर हुए हैं यार. ये क्या किया है अपने लाइफ में. कितना बार सुने हैं हमने जावी को, इनिएस्टा को, नो, जिनेदिन जिडान. दे आर टॉप लेवल, उस लेवल पे खेलना था इसको, ये चाहता था खेलना. दैट वाज हिज एस्पिरेशन ना. कितना बार उनको रोते हुए सुना है इससे, या हमने सुना था. वो जाते थे अपना काम करते थे. बिल्कुल. विराट says Pogba just know how to make new haircuts. तो वो भी अच्छे नहीं बनाता है. On number two, मेरे को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है Pogba पे. He can fuck off. On number two, it's one of the highest paid defenders, highest paid during his time, Rio, Rio Ferdinand. 133 million वर्थ इट मैन. valuation adjustment. एब्सोल्युटली वर्थ इट. बाकी सारे चीज छोड़ दो जो आज वो कर रहा है ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल. एज अ फुटबॉलर ऑन हिज डे ही वाज फकिंग ब्रिलियंट. उसका गेम No का doubt. रीडिंग, उसका गेम का रीडिंग, माय गॉड, जिस तरह से वो गेम रीड करता था. लाइक ही इज पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडिंग duo of Premier League history. He and Nemanja Vidic. So obviously he was that good. And I'm surprised कि Nemanja Vidic नहीं है इस लिस्ट में. So if you had to pick one centre back out of Rio and Vidic, रियो फर्डिनैंड एनी डे. why? रियो फर्डिनैंड का जो फुटबॉलिंग ब्रेन था वो बेटर था नेमांजा विडिच से. नेमांजा विडिच वाज अ मसल, रियो फर्डिनैंड वाज द ब्रेन. वो दोनों इसीलिए काम करते थे. नेमांजा विडिच जाके टैकल मारता था, वो जाके एग्रेशन दिखाता था. एंड रियो यूज्ड टू कवर हिम. टू कवर यू हैव टू नो कि वहां पे क्या गलतियां हो सकती है, उससे कहाँ पे मिस्टेक हो सकता है. तो वो लाइक ऐसे देख कि समथिंग, somebody is a muscle जो कि जाके अपन तेरे लिए लड़ेगा, बट जो बैकग्राउंड में बैठ के जो दिमाग चला रहा है ना, वो हमेशा बेटर रहता है उससे. True, true. Virat says Harry Maguire. Why, please?
Just says, how you doing, meet bro? Still suffering from UCL dropout. So those, just and the others, those who haven't subscribed, please subscribe. We are here every night. So like, comment, subscribe. Link into our social medias as well. You can come and banter us like this. We are happy to have rivals here as well. Uh, just इतने ups and downs देखे ना मैंने in my United time recently that UCL dropout feels like an ancient thing now. ठीक है? We will not even get top four. So I'm ready for Europa League and very happy about it. Not happy, but yeah, accepted. So let's talk about someone who's let's take Sagar's comment पहले. पहुंच नहीं आएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में बिकॉज पीएसजी को 20 मिलियन यूरो कंपनसेशन देना पड़ेगा और पीएसजी भी इन करंट सिचुएशन में पहुंच जाने नहीं देगी. बॉक्स मार्केट में भी कोई अच्छा मैनेजर नहीं है. Hmm. If we want Pochettino, we'll get him, irrespective of the compensation. 20 million 15-20 नथिंग, million. Yeah, कुछ नहीं है. एंड जिडान खड़ा है वहां पे पीएसजी को लेने के लिए. इफ पीएसजी रियली बिल्कुल. वांट्स वो जा सके जिडान को ले लेगी. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मुझे राल्फ का इन्फ्लुएंस लगता है. ही डजंट वांट पॉच. So एक comment आया था, Raf wants ETH and Sir Alex Ferguson wants Pochettino. ओके, सो लेट्स गो फॉर Thoughts? लुई एनरिके. नहीं When you said नहीं Louis, वो I thought you were gonna say Louis Van Gaal. let's go for Luis Enrique. No, either neither. But on serious note, it's time we should move on from Sir Alex Ferguson. We should move on from our history and we should start creating our future. At this point of time, the person who understands the current scenario in football, who understands the modern football, is Ralph Rangnick. Sir Alex Ferguson did what he did, and he did it in his own style. But that style and those way of football playing is outdated. He can know what is good, what is bad, what tactics are playing. But at Hmm. this point of time, with Ralph in here, I don't want anybody else to interrupt anybody. And no disrespect to Sir Alex, he has done great things for us. But it's time that both should and United should look forward and give the all the decision making capacity to Ralph. And Sir Alex Ferguson का वो समय आ चुका है when United should start performing and he should just relax and enjoy. भाई जो काम उसने करके वो करके गए हैं यूनाइटेड के लिए, उनको थोड़ा सा एंजॉयमेंट तो दो यार. लेट हिम एंजॉय अ कपल ऑफ टाइटल्स फॉर यूनाइटेड at least. I remember when United won the title after so many years and Sir Matt Busby was there. Hmm. That feeling of Sir Matt Busby. So True. So so football it's okay. enthusiast says Mancini अगर sack हो गया इटली से तो would he be a choice? No way. He would be a choice, but not a top choice. No. वो 8th 9th पे रहेगा. उससे पहले बहुत सारे मैनेजर्स रहेंगे. उससे पहले राल्फ खुद को अपने आप को अपॉइंट कर लेगा. Amar says Zizou is gonna take the French team job. विशाल says हम लोग किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 20 मिलियन तो ये लोग पे कर देंगे if they made up mind for Pochettino. Exactly. Yeah. But then don't discount the penny pinching of this board. You never know. हाँ तो ये डालेगा था कि 10 मिलियन अभी, बाकी का 10 मिलियन आफ्टर ही वंस द चैंपियंस लीग. Like Marshall is gonna win the Ballon बैलेंस d'Or. दिया तो ऐसे कुछ क्लोज जाएगा और क्या जाएगा. It smells like balloon there or for him. So Virat says, after seeing the gameplay of Harry Maguire, I think if practice football for 3 months, I can become the centre back in EPL. भाई हाइट क्या है कम से कम हैरी मैग्वायर जितना हाइट तो रख ना. Viraj, why बाकी not? Why not? विराट विराट Dreams do come true. यू ओनली नीड टू हैव हाइट. ठीक है ना, बाकी कुछ हैरी मैग्वायर के पास भी नहीं है. सो यू विल ऑलवेज एनीवे डू बेटर देन हिम. तो बस हाइट सही रहना चाहिए. And let's come back. Number one on the list, which I think might raise a few eyebrows. Uh,
is JS Veron, June Sebastian Veron, 155 million pounds. We actually, overpaid for it a lot. He was a record signing at that point in time उसने कुछ भी नहीं किया. and was a massive failure. सही Massive बात है. failure for Manchester United. एंड वन डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि जिस जो रेपुटेशन के साथ वो आ रहा था, Exactly. एक्सपेक्टेशन था कि दैट ही विल वर्क वेल विद द, बट हो जाता है कभी कभी. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि एवरी प्लेयर इज अ सिस्टम प्लेयर. कोई सिस्टम आपको सूट करता है, कोई नहीं सूट करता है. इट डजंट मीन कि आप एक जगह फेलियर हो गए दूसरी जगह सक्सीड नहीं करोगे, या दूसरी जगह सक्सेस हो गए तो एक दूसरी जगह भी आप सक्सीड कर जाओगे, आप फेल कर सकते हो. So let's talk about the title of this show. We wanted to do something different for to begin with. Uh, Pratyush, English media and Manchester United as a hated love story. भाई बताइए क्यों? भाई ऐसा है ना कि इंग्लिश मीडिया ऑलवेज ऑलवेज वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू बी न्यूज, फॉर नेगेटिव और फॉर पॉजिटिव. अभी डाउन है तो हम पूरा का पूरा नेगेटिव जा रहे हैं. जब अच्छे थे तो थोड़ा पॉजिटिव रहता था, थोड़ा नेगेटिव रहता था, बट नेगेटिव विल ऑलवेज बी देयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि दैट इज द टिक बेट. आपका पूरा का पूरा क्लिक्स, आपके पूरे के पूरे पैसे बनाने का जरिया मैनचेस्टर यूनाइटेड है फॉर इंग्लिश मीडिया. इफ यू टेक मैनचेस्टर हाँ. यूनाइटेड आउट, उनका खत्म है. They will be dried out in the sun. तो यू दे ऑलवेज नीड मैनचेस्टर यूनाइटेड. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दे हैव क्रिएटेड, जो जो निगेटिविटी हम देखते हैं ना अराउंड द क्लब ऑन सोशल मीडिया, उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है ना ये इंग्लिश मीडिया है. बहुत बड़ा रीजन इंग्लिश मीडिया. Because the young players the young followers who haven't seen Manchester United in the good days, who haven't understood what Manchester United stands for, who don't understand that football is not about कि कल सुबह उठे और हमारे पास एक विनिंग टीम हो जाएगी. तो they are so much impatient. और उसका एक रीजन है मीडिया, बिकॉज मीडिया ऑलवेज कम्स अप with something negative even if everything is going well. Always comes up with something negative. So there's a very good comment by Anjita here. 93% of the PL winners comes from managers with zero Premier League experience. Stupid obsession with PL experience, Poch. Uh, True, true. And I think me and Pratyush are both uh, who doesn't prefer Pochettino at Manchester United. But so let me tell you why people want Pochettino. He's a safe choice. He has done good things at Southampton and Tottenham, which will take us to a top four club. And you know what? Glazers का एक minimum जो बार रहता है, that's top four. अब top four दे दो, Glazers are happy. So for them, it's a very safe and a sound choice. Who can rebuild, who can work with a lesser budget. He's not gonna go out bang bang like Jose Mourinho or gonna be vocal like LVG. He's not gonna do that. So a tag that is given to him is being a yes man for the club. Apart from that, he can get good results. So he got a Champions League final for Tottenham, which cannot be discounted. Uh, So ये सब चीजों को देखते हुए he becomes a very safe and a sound choice जो regularly आपको top four दे देगा. Anything above that it's a bonus. ठीक है, he might even give you a title run. ठीक है. So that way it's a bonus for Glazers. That's why he is being touted as one of the possible next managers. He is not a bad manager. Let me जितना भी मैं उसको dish करता हूँ, he is not a bad manager at all. But I think, as it was in the case of Ole, there is a ceiling and very evident ceiling in terms of uh, Pochettino because वो साल इतने साल देखा है हमने. Plus जो ETH का ceiling I feel it's higher and he's an upcoming manager. Pochettino has been here in Premier League and all the stuff since a decade now. So I think that should be the flavor for Manchester United and let's see क्या होता है. And but if you want to do a safe job, Pochettino would be a choice. And
many people want trees and eyebrow for that. If you want to go for some even safer job, yeah, give it back to Ole. अरे ओले कैसे यार, अब 18 मिलियन ओले फ्री में आ जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज डाल देता है कि मेरे को यूनाइटेड आया तो आई गो फॉर इट। ठीक है, अब पोचेटिनो को 18 मिलियन दे के लाएंगे ना, इट्स बेटर। इतना इतना मेहनत करके मैनेजर को वो स्काउट करके, जैसे 800 राइट बैक में से एरन वैन बिसाका को चूज किया था, वाज अब मैनेजर्स 8000 मैनेजर्स में से वो चूज करके ला रहे हैं। A futile comparison, but obviously Cristiano Ronaldo in anything and everything. विराट स्टॉप कंपेयरिंग दीज टू। 2 से 3 साल इनके बचे हैं एट द मैक्स। एंजॉय देम, बस वही बोलूंगा मैं। ये दोनों जो है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर्स में से है, बोथ ऑफ देम ग्रेटेस्ट एवर्स में से। एंजॉय व्हाइल दे लास्ट। बाद में ये करते रहेंगे कंपैरिजन, कौन बेटा था कौन नहीं था, बहुत समय है उसके लिए। So there has been some breaking comments. I'll share them with you. Just give me 10 seconds. First of all, let's, because we are on the talk of managers, let me talk about managers a bit more. So Telegraph से आया है लेकर, Eric Ten Hag and Pochettino remain the front runners for the United job, with Luis Enrique determination to manage Spain at the World Cup finals, pushing him out of contention. Enrique feels a loyalty towards Spain, which United respect, with the prospect of a job share considered a non-starter and the club having little interest in going next season with an interim manager. So I think that's it. I think. In addition to Eric Ten Hag's formal interview, Pochettino has also already had some talks with football director John Mata. Nice. फुटबॉल क्या क्या लास्ट का? फुटबॉल डायरेक्टर जॉन माटा, उसका जॉन माटा से बात हुआ है, उसका इंटरव्यू नहीं हुआ है, इट इनडायरेक्टली सेज दैट। अच्छा, And Jonathan Schrager has come out and made two comments, which I want to quickly take you through. Marcus Rashford just wants to get fitter and help the team he loves get results. He's not been able to show best this year, and deep down he would admit that. But he feels confident that with a good preseason and right support, he'll be able to get back to himself. ठीक It's always been the plan for Marcus to stay at United and try to reach the club's goal scoring record one day, but he knows that he needs support in order to be able to do so. His mentality is that United are a family, so at this point, everyone has to stick together. है। रूनी के कमेंट पे आया ये। रूनी ने तो ठंडा कर दिया है ना रशफोर्ड को। उसके कमेंट पे आया है ये। मस्त मस्त। एंड मतलब सही है, ठीक है, आपको जो भी करना है करो, गेट योर हेड डाउन एंड स्टार्ट वर्किंग, इट्स फुटबॉल। बाकी सारी चीजों को साइड रख यार। exactly. Reports actually, Red Angle का comment is, report actually suggests that ETH won't demand wholesale changes and will be happy to work with the current squad backed by Majid as well thoughts. यार देख, ऐसा है कि Define wholesale changes. If he नहीं, says I need 5 players, is it wholesale? देखो Or 4 मैं players? मैं भी कैसे बताता हूँ, हाउ आई लुक विद अंडर इट इन हाउ द प्रोग्रेस कैसे होगा। मे बी टू Hmm. साइनिंग्स दिस सीजन, a CDM and a backup striker, ठीक है, एंड अ होलसेल सेलिंग। आप सेल करोगे, पॉल पोगा विल बी गॉन, एंथनी मार्शल को हम सेल कर देंगे। आई वांट यू नो, और कौन है, लिंगार्ड चल जाएगा, माटा को पांच तो जाना, फ्री है, 5 तो फ्री वाले जा रहे हैं। वो छोड़ दे, माटा को निकाल देना, इट्स ओके, ही इज नॉट फ्री। कंट्रीब्यूटिंग नाउ, लेट हिम गो। Hmm. फ्री में जा रहा है तो मैटिच, आई वांट एरिक बाई, फिल जोन्स, दोनों को निकाल लो। इफ यू आर गोइंग टू गिव मेंगी एंड टोंजेबी एनी चांसेस, दोनों को निकाल Even लो। Willfish is making right shouts. अभी है, बट लेट्स सी क्या होता है उसके लिए।
ये इतने इतने प्लेयर्स को आप निकालो सबसे पहले, स्टार्ट द ऑफलोडिंग प्रोसेस। इस सीजन दो प्लेयर्स आएंगे, सीडीएम एंड अ स्ट्राइकर। नेक्स्ट सीजन इन जनवरी फिर से आप प्लेयर्स को निकालो जो अभी से लेकर जनवरी के बीच में आप एरिक टेन हाग विल मेक श्योर कि दिस प्लेयर्स डू नॉट फिट मी। आप उस समय फिर एक एक दूसरा सेल करो। लाइक अभी जो प्लेयर्स को आप सेल कर रहे हो दे आर लाइक ओवरऑल क्यों, दे आर खत्म, वो खत्म हो चुके हैं, इनको अब रहना ही हम्म। नहीं क्लब में। उस टाइम पे वो प्लेयर्स सेल करो जनवरी में जो आपको एरिक टेन हाग डजंट वांट। ही सेज दैट हम्म। they are not good for me or they do not suit my style of play, let them go. Next windows, next summer window में you we will need one right winger, one right back, one left back and one center back। चार प्लेयर्स आपको वहां पे चाहिए होंगे नेक्स्ट विंडो में, ठीक है। बाय दैट टाइम यू विल हैव अ गुड स्क्वाड रेडी। तब तक उसके बाद फिर आप फाइनल पीसेस के लिए इन द लास्ट द थर्ड विंडो जो कि मैं देखता हूँ जहां पे इसके बाद हम टाइटल के लिए जा सकेंगे, उस समय तक हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्क्वाड रेडी हो जाएगा। देन वी विल गो फॉर दोस प्लग इन जो एक या दो बड़े प्लेयर्स चाहिए होते हैं टू यू नो गो फ्रॉम दिस लेवल टू द नेक्स्ट लेवल। उस समय आप दो प्लेयरों को दे दो, बड़े प्लेयर जो आपको चाहिए होते हैं। वी आर रेडी टू गो। दिस इज हाउ आई सी और हाउ आई इमेजिन जाना चाहिए इस चीज को। Um, I don't see United buying less than four players this window. Anything less than four players means that we are having a short supply somewhere, or we haven't cleared out as we should. ठीक है, हमको बोल सकते हैं बट एट द सेम टाइम आप कहाँ पे प्लेयर लोगे यार, एक राइट विंग को छोड़ के। स्ट्राइकर, ठीक है, वो स्ट्राइकर सीडीएम तुमने बोल ही दिया। स्ट्राइकर सीडीएम, ठीक है। हाँ। अब पॉसिबल देखते हैं, पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। हाँ, सेंटर बैक, राइट बैक, लेफ्ट बैक, राइट विंगर देख, एंड अनदर मिडफील्डर। चल ऐसे देखते हैं। When he comes Erik ten Hag, most probably with Rafael Varane he will play Lindelof। ठीक है, Lindelof is a good choice। जो यू नो क्या नाम था, ब्लिंड हमारे साथ अच्छा नहीं लगता था, he played better with you know Erik ten Hag under Erik ten Hag। तो he can also improve Lindelof in that point of time। सेंटर बैक आपको बैकअप बन जाएगा हैरी मैग्वायर, टाउनजेबी और ये क्या नाम है, मेंगी, टेरन मेंगी। आपके पास तीन बैकअप बन जाएगा। देन सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड तुमको खरीदना ही है। एक राइट विंग आई थिंक विल बी द वन दैट वी विल मिस मोस्ट प्रोबेबली, बट अमाद आएगा तो आई थिंक अमाद कैन कवर भी, उसको भी टाइम मिलेगा वहाँ पे खेलने के लिए। एलंगा इज डूइंग वेल, वो भी इम्प्रूव करेगा। एक चीज और समझना बहुत जरूरी है, अंडर एरिक टेन हाग फ्रंट थ्री वोंट स्टे फ्रंट थ्री, वो मिक्स एंड मैच करते हैं, दे कीप मूविंग अराउंड, वो चीज भी है। सेकंड, मिडफील्ड में आते हैं। मिडफील्ड में सीडीएम के अलावा क्या चाहिए आपको? बैकअप कैम, वेंडबिक, हनीबल, कुड वर्क, बट देन एक नंबर 8 भी चाहिए मे बी। गार्डनर इज कमिंग अप। स्क्वाड प्लेयर्स आई डोंट फील मैकफ्रेड और गार्नर का पता नहीं अभी। एक सीडीएम अगर आपका आ जाता है ना, आपका पूरा मिडफील्ड सेट हो जाता है। फ्रेड प्लेस बेटर विद अ सीडीएम, ठीक है, तो ही कैन प्ले नंबर 8, हैनिबल कैन प्ले नंबर 8, गार्डनर कैन प्ले नंबर 8, वैन डी बीक कैन प्ले नंबर 8। आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना, उन प्लेयर्स को चेक तो करना पड़ेगा कि विद सीडीएम वो काम करते हैं कि नहीं करते। अभी आप रश क्यों करोगे कोई मिडफील्ड में एक सीडीएम को छोड़ के? बाकी सारे प्लेयर्स को एक सीडीएम के अराउंड आपको देखना पड़ेगा कि हाउ दे वर्क। यू नेवर नो, इवन मैकटॉमिनी कैन सरप्राइज यू विद अ सीडीएम, बहुत इफेक्टिव प्लेयर बन सकता है। So there's a comment. Thoughts on Harry Kane rumors. So we have already talked about it, but in a nutshell,
these are serious links. Hurricane ka links are not coming from average sources. It's coming from good sources. So don't be surprised if we are strongly linked with him, irrespective of the manager. That's the fear. Personally, I would rather go for a young striker. Hurricane would cost 100 million plus 400k plus in wages, as Pratyush has mentioned. So, but then shirt sales, English, proven goal scorer, काफी चीजें भी हैं. A typical United signing would be Harry Kane, overpriced. टिपिकल यूनाइटेड साइनिंग हैरिकेन तब हो जाता ना जब आपका पूरा का पूरा स्क्वाड रेडी रहता एंड यू नीड वन वन पर्सन जो कि आपको वहां नेक्स्ट लेवल पे ले आता देन हैरिकेन वुड हैव बीन परफेक्ट फॉर अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नो यार ये काफी ग्रे एरिया है when people say that you just need one player and everything will be sorted. I think it's a huge gray area. If last season ये thought था कि if we get a CDM everything will be sorted. I वी think डिडंट this गेट अ squad is सीट far away from a CDM. You just cannot do it with just a CDM. दैट्स ओके दैट्स अंडरस्टैंडेबल दैट्स अंडरस्टैंडेबल बट हमारे पास जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं हैनिबल Garner, they will create a different type of environment in the midfield with a CDM, and that will put pressure on those under firing players. Expected है ये. But जो लास्ट सीजन में जो हमने गलती किया सीडीएम वो तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं यार. हमको जो प्लेयर चाहिए था वो हम एक सीजन बाद लाते हैं. जो जो मैं ये बोलता हूँ ना कि आपको एक प्लेयर चाहिए होता है जो डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो डिफरेंस आपको दिखा लिवरपूल में व्हेन दे बॉट वर्जिल वैन डाइक. वो डिफरेंस आपको लिवरपूल में दिखा जब उन्होंने एलिसन को लाया था उसके नेक्स्ट इसमें जब वो फाइनल हार गए थे कैरियस वाज नॉट गुड इनफ दे थॉट दे हैव अ गुड स्क्वाड दे जस्ट नीड वन प्लेयर दे बॉट एलिसन एंड ही डिड द जॉब. मैनचेस्टर सिटी से तो मैं कंफर्म करूंगा ही नहीं क्योंकि वो पूरा का पूरा बैकलाइन एक विंडो में चेंज कर देते हैं सो दैट्स डिफरेंट ऑल टुगेदर. So Pratyush, today we have really new people in the comment section as well. So those who are new, please subscribe. 200 subscribers पे we gave away a 2002 player edition David Beckham jersey. ठीक है. On 1000 we are planning to give away Ole Gunnar Solskjaer 1999 jersey. So subscribe. As content creators, it helps us a lot as well in terms of our scalability. We want to do a lot of things. We want to bring United players here as well. वो भी कोशिश जारी है, but with these numbers we cannot. We'll do it in the future. We'll definitely do it. We are in talks as well, but then not with these numbers. So if you're new, if you're liking our comment, liking our content, please like, comment, and subscribe. And I'll take the comments quickly and we'll wrap it up. Mayuresh Chavan says priority order of Manchester United signings: CDM greater than striker, right back, centre back, left back, and right wing. I think. Very close to what I think. I think But right then wing comes before right right wing back. should be higher. Yes, right wing should be higher because it has become a concern for us. Uh, Mudit says manager CDM striker will be United's summer. So guys, let me tell you, Mudit Arora is a very dear friend who thinks that Harry Maguire will score a World Cup final goal. My condolences. भाई कभी भूलने नहीं देगा तो इसको बेचारे को ये Anyway, uh, anything else, Pratyush? You want to discuss what we have missed or we have we anything? have, we have mostly discussed what we were here to. Okay. Okay, guys, we'll see you tomorrow with lots of new things. Have a brilliant night. Stay safe. Keep good health of yourself and your family. Good night. Take care.